Start. Come on, guys. How are you? यार इसको बंद करो यार. चलो ठीक है, डन. ठीक है ये रहने दो. आप एक कंटेंट होता है, मैं आपको उस क्लास में देख रहा हूँ. क्यों? आप पे भी सर टीचर है, वहाँ पे भी. ठीक है चलो बैठो यार, जल्दी बैठो. So guys, welcome. Come on, get in quick. Good afternoon, everyone. Have a seat. Huh? So today we are going to discuss number system. I need 3 classes. You get in quick. Today, tomorrow, day after tomorrow, right? We have to clear all the concepts and we have to talk about PYQs as well, right? So what are numbers? We are going to discuss it, and what are the categories of numbers, divisibility rules, and the questions that have been asked in your exam, right? So what are natural numbers? Chaitanya? Number starting with 1.1 is a natural number. So what do you say? Number starting with 1 तो okay, 1.1 is also number starting with 1. Hey yaar, come on, all counting numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and so on. No fractions, no decimals, right? Generally, most of us write numbers from 1 to infinity. That's wrong. Fractions are not a part of natural numbers, only counting numbers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Got it? So these are your natural numbers, no fractions, no decimals, right? Sit down. Come on. What are whole numbers, guys? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and till infinity, right? Now, whenever you add 0 to natural numbers, you get whole numbers. Again, property is same, no fractions, no decimals. All right. So who invented 0? Aryabhat. Huh? 0 represents what? No value. Come on. 0 represents what? India. Yes, he says 0 represents India because Aryabhatta actually invented it. Yes, that might be a great thought. And you know, 0 is important. Agreed? How many of you have been called 0 in your life? I've been called many a time 0 in my life. You know, generally whenever parents they get infuriated, "साला तुम कुछ नहीं करेगा, 0 है बिल्कुल." Isn't it? Agreed? हुआ है, सबके साथ हुआ है, right? So 0 represents nothing. Agreed? But 0 then also is a very important number. When you talk about your salary, what do you want in your salaries? More zeros. Do you ever say more 9s? नहीं, 0 चाहिए. जितना 0 होगा उतना अच्छा होगा. ये यार साइलेंट पे कर दो अपना फोन यार सब लोग, है ना? So 0 is important. We'll talk about it. Don't worry, right? Then what are integers? Integers, guys. इसको बंद कर. अच्छा कर ले. Integers. Integers क्या होते हैं? Integers. यार तुम क्या कर रहा है? तुम्हें integers नहीं पता है? तुम्हारा आशीष क्या होता है integers? Hey, get in quick. Minus 1.1 is an integer. Only counting number. सुनो, पहला वो गीत है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 is natural. उसमें 0 ऐड किया is whole. And then negative of natural numbers भी आप लिख लीजिए, which means आशीष से सर minus infinity to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 till infinity. These are your integers, but
Important point, guys. Important point, right? Remember, for first three categories, no fractions, no decimals. Important. This is what we have been missing. तुम लोग integer बोलते हैं minus infinity to infinity. No, minus infinity to infinity would be all numbers, fractions included. Clear है? So it's more of we wanted counting, so we invented natural. Then we wanted zero, so we invented whole numbers. Then we wanted negative of the numbers, so we invented integers. Clear है? ये यार हाँ बोलेगा ना बोलेगा? Clear है सबको? खाना वाना खाया सबने? जवाब तो दो, right? And then comes rational. What are rational numbers, guys? Brilliant. Brilliant. What does a rational number represent? If you talk about necessity, you know, natural numbers were counting numbers, whole numbers were zero included, then there were negatives. Now what do you want? You want a fraction. What do you want? You want a fraction. So rational numbers would represent fractions. That is the reason our friend said numbers of the form P upon Q, Q not equal to 0, HCF of P and Q is 1, and most important, P and Q, they belong to integers, right? P and Q belong to integers. But why Q not equal to 0? Anyone? Yes, not defined. Good. Infinite नहीं बोला किसी ने. I was worried. Infinity नहीं होता है. Anything divided by 0 is not defined. Anything divided by 0 is not defined. Clear है? Right? And why HCF of P and Q should be 1? Brilliant. I think if you say it, listen, have you ever written your answer as 10 upon 15 in your younger years? You would cancel off the common factors and write 2 by 3. Any rational number should be written in the simplest form. Simplest form is when all the common factors are ignored, terminated. So whenever you write a fraction, denominator or numerator के बीच में there should not be any common factor. Only one is the common factor. That is the reason we have been cancelling the common factors. And why P and Q should be integers? Because fractions can be negative. Fractions negative भी तो हो सकता है, isn't it? If you attempt all your questions in the paper and all of them are wrong, definitely you would get negative marks, right? Negative is also required. Clear है? Clear है, guys? ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं होता. समटाइम्स वी इन्वेस्ट इन इक्विटी, है ना, वी इन्वेस्ट इन शेयर्स, डिविडेंड्स, इक्विटी, एंड वी फेस लॉसेस. सो लॉसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रल थोड़े ना होते हैं. देयर माइट बी अ लॉस ऑफ माइनस ऑफ 2.5%, माइनस ऑफ 3.3%, राइट? डेप्रिसिएशन. Agreed. So depreciation, if you look at depreciation, last year क्या था average depreciation, guys? Minus of 8.33%. So that is the reason fractions can be negative as well. Okay, beta? Huh? What are you saying, please? Zero. I will talk about it. We'll talk about zero. Right. Rational is clear. Now my question to you, every integer is a rational number or every rational number is an integer? Tell me. Every? Even you have to answer here. Be happy. Huh? What about you? What do you say? Every rational is integer. Every rational is integer. Here every integer, you pick up an integer. Suppose you say minus of 5. Minus of 5 can be written as minus of 5 upon 1. P upon Q की form में आ गया. So every integer is a rational number. But every rational is not an integer. Agreed. Because integers do not have fractions.
and rational numbers are fractions as well. So can you write it? Every integer is a rational number, and vice versa not possible, not always possible, not always true. Clear? Clear है guys? अब clear है? Right. And then what are irrational numbers? What are irrational numbers? Now it is right. देखिए irrational as far as when we say literate, illiterate, right? So you see opposite to what? So rational के opposite irrational. So many people would say numbers that are not rational are irrational. A right definition. Or many people would also say numbers that cannot be written in terms of P upon Q, where P and Q are both N and N puri definition. Agreed. But what is the form? And then a lot of people will give you a definition. Examples also root of 2, root of 3, log of 2, log of 3, log of 5. But how do you recognize an irrational number? It's really very simple. Decimals that are non-recurring and non-terminating. Decimals that are non-recurring and non-terminating are irrational numbers, right? Examples, yes, right, root of 2, root of 3, root of 5, log of 2, log of 3, pi. Approximate value of pi is 22/7. Exact value is still we don't know. So when we say 22/7, it's a rational number. But pi ka, that is an approximate value, not an exact value. So you cannot say pi is an irrational number and value of pi is 22/7. Wrong. It's an approximate value, not an exact value. Clear it? So this is a difference. Irrational, non-terminating, non-recurring. Again, in your mind, it would again be striking. What do you mean by non-terminating, non-recurring? So I'll give you 2 examples. There you go. If you say 3, 6, 7 bar, number with a bar, now it is going to be 0.3676767. So this is a non-terminating till infinity. So I can say this is non-terminating, but it is recurring. Isn't it? Recurring कैसे है? 676767 is being repeated again and again. So this is a rational number. It is not irrational, guys. Irrational क्या होता है? Which is non-terminating and non-recurring. This is non-terminating, but it is recurring. Clear है? So what is non-terminating, non-recurring? ये देखो. If I write certain number like this, 0.36731931100797981456632 and goes on and on and on. If I write it, this exists, and if this exists, this is a irrational number because there is no regular pattern of recurrence and it is non-terminating as well. So this is your irrational number, and there would be infinite number of irrational numbers. Clear? So this is something you have to understand. This is your rational number. Chalega? Can you write it? Come on.
And then comes real numbers. What are real numbers? Yes, all numbers. All numbers, or we call it, this is real numbers, minus infinity to infinity. Every number, देखो, I have used open bracket, which means every number on the number line. Or the best example would be real numbers are rational plus irrational. Rational plus irrational. Once you know numbers, then only you would be able to understand what exactly are we doing, because a lot of people, hey, get in late, jaldi jaldi, no issue, बैठो. नंबर सिस्टम करना है, लोगों को नंबर्स ही नहीं पता है नंबर्स होते क्या हैं. Frankly, right now, today onwards, please keep this diagram in your mind. If this represents a set of natural numbers, उसमें जीरो ऐड किया, क्या आ गया? होल नंबर्स. में नेगेटिव ऐड किया, आ गया इंटीजर्स. आपने अभी बोला एवरी इंटीजर इज अ रैशनल एंड इरैशनल आर नॉट रैशनल, एंड रैशनल प्लस इरैशनल आर real. This diagram should always be there in your mind. Number system diagram. Real, real. Red नहीं है, real. REAL. आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ. क्या तुम मैराथन भाग क्या है? इट हैपेंस. 25 जाना, यहाँ जाना, यही चला रहता है यहाँ पे. कोई बात नहीं. गुड ईयर हियर. एज वो कहते हैं ना 3 इडियट्स वाला डायलॉग, कि जब आ जाओ कक्षा में, ठीक है, कभी मत लेट होना, डरो मत, कक्षा में एंटर कर जाओ बस. Shall we proceed? Now we have to talk about zero. देखो यार, what are even number, what are odd numbers? Tell me. What are even numbers? Okay, those that are divisible by 2. Odd numbers? No, we should say odd numbers are when they are divided by 2, leave remainder 1. Better definition, isn't it? Isn't it? Better definition. So guys, is zero even number? No. Is 0 even number? Is -2 a even number? No. Even and odd categories are for natural numbers. Remember that. Okay? Keep this thing in mind. Especially this mistake is made by math students, because they have done trigonometry where they say sine of n pi to n pi is equal to 0, where n belongs to integers, right? So first important part, 0. 0, neither even nor odd. Even odd category is for natural numbers. Keep this thing in mind. ठीक है, कैटेगरी नेचुरल नंबर का है बेटा. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड. सेकेंड, इज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. बड़े लोग आओ बेटा, बैठो, जहां मर्जी बैठो. 0 is neither positive nor negative, isn't it? Third, 0 is a multiple of every number. 0 is a multiple of 7, 0 is a multiple of 11, 0 is a multiple of 13, 0 is a multiple of 15.
Why? 0 can be written as 15 times 0. 0 can be written as 13 times 0. 0 can be written as 3 times 0. 0 is a multiple of every number. Clear hai? Right? And 0 does not divide any number. Multiple, right? 1 can be written as 1 into 7. No, it would become 7. 0 is a fact. 1 is a factor of every number. All right. 1 is a factor of every number. What are factors of 7? 1 and 7. What are factors of 9? 1, 3, 9. What are factors of 15? 1, 3, 5, 15. Okay. 1 is a factor, right? But 0 is a multiple of every number. Got it? Clear hai guys? It is important because I am going to talk about divisibility rules. Usme 0 काम आती है, right? So from today onwards, you can understand 0 is important. 0 is obviously God. Na kala, na gora, na male, na female. Isn't it? भगवान सबके अंदर है. 0 is a multiple of every number. And भगवान कभी भी किसी को divide नहीं करता है. 0 doesn't divide anyone, any number. तो जिसने भी आपको 0 बोला आज तक, appreciate. ठीक है? वो कहना चाहते थे तुम भगवान हो, चैतन्य तुम भगवान हो, हाँ, दर्शिका, हाँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ मैं, हाँ? चलो क्लियर है गाइस, राइट? कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके? टेंशन नहीं लेने का. नाउ फैक्टर्स, राइट? पहली चीज प्राइम नंबर्स एंड फैक्टर्स लिखिए. प्राइम नंबर्स एंड फैक्टर्स. लेट्स टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स. Factors. What are prime numbers? At least क्यों बोल रहा है? ये तो गलती हो गया है. You want to say 9 is a prime number because 9 has factors 1, 3 and 9. At least 2 तो हैं सर. हाँ, क्या बोलते हो गर्ल्स? व्हाट डू यू से? प्राइम नंबर्स. दर्शिका, ये तुम टेंशन में मत बैठो है. हाँ, गुड. बताओ प्राइम नंबर्स क्या हैं? अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या हैं? आशीष बाबू. 1 is divisible by 1, 1 is divisible by itself, 1 is not a prime number. आपकी डेफिनेशन गलत है. 1 is divided by 1, 1 is divided by itself, 1 is not a prime number. फिर बोलेगा except 1 sir. लिखो, I think prime numbers having exactly 2 factors. Darshika is right, exactly 2 factors. Numbers having exactly 2 factors. Prime numbers. Clear? Message. Prime number क्या है? Exact 2 factors. Don't define the factors. The problem is we have always been talking about only 2 categories, prime and composite. No, there are 3 categories, right? So पहला है prime, दूसरा है composite. What are composite numbers? 3 or more factors. अभी तुम बोलेगा at least 3 factors. समझा? So numbers having 3 or more factors, right? लिखिए, numbers having 3 or more factors. And what is the third one? Neither prime nor composite, which is 1. 1 is neither prime nor composite. ये important है. Category 1, category 2, category 3 is neither prime nor composite. Neither prime nor composite. So what is that? 1. Because it has got only 1 factor. Right?
So if I say what are examples of prime numbers, everyone knows prime numbers क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and so on. Prime numbers. Where? Composite 15, 14, isn't it? 30, more than 2 factors, any number. 4 is a composite number. Number of factors are 1, 2, 4. 8 is a composite number. Number of factors are 1, 2, 4, 8. Right? Come on. 25 is a composite number. Number of factors 1, 5, 25. Numbers that are not? No. 1 is not prime number, but it is not composite. Exception kills, right? Remember that. Yeah, 1 is neither prime nor composite, but if you want exception, 1 has to be included, isn't it? 1 has to be included. So, one information I want to render, because they gave you tacky questions also, right? Always remember one thing. If a number is having exactly 3 factors, आप लिख लीजिए, if a number is having exactly 3 factors, if a number is having exactly 3 factors, Hi Simran, you there? Good, yeah. If a number is having exactly 3 factors, it is a square of a prime number. It is a square of a prime number. ये important है, because they ask you these kind of questions, right? Sir, 3 फैक्टर हमेशा क्या होंगे? स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, अदरवाइज किसी भी नंबर के 3 फैक्टर नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 3, 9. व्हाट इज 9? 3 स्क्वायर. 25 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 5, 25. व्हाट इज 25? 5 स्क्वायर. Right? Can you tell me a number which is having 3 factors? It would always be a square of a prime number. Note कर लीजिए. Clear है? Okay. Then every prime number. Now please pay attention to this also. Every prime number other than prime number 2 and 3. Every prime number other than prime numbers 2 and 3. It is either 6k minus 1 or 6k plus 1. So देखिए, 5 can be written as 6 into 1 minus 1. 7 can be written as 6 into 1 plus 1. 11 is 6 into 2 minus 1. 13 is 6 into 2 plus 1. 17 is 6 into 3 minus 1. 19 is 6 into 3 plus 1. Right? 23 is 6 into 4 minus 1. 29 is 6 into 5 minus 1. 31 is 6 into 5 plus 1. So कोई भी prime number है, it is 6k minus 1, 6k plus 1. Meaningly, if you really want to write, because they give you a lot of divisibility, any prime number when divided by 6, any prime number when divided by 6 leaves remainders 1 or 5. This was something that is not known to many people, right? Clear hai? And when you see this set of prime numbers 2, 3, 5, 7, isn't it? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. One most important observation is there is only one even prime number. Only one even prime. Rest all are odd. Rest all are odd. Obviously, any other prime number cannot be even. Then number of factors would increase, because any even number is a factor of 2. 1 is always a factor, we have discussed, isn't it? So 1 bhi ho gaya, 2 bhi ho gaya, number itself is also a factor. So it cannot happen. So there is only one even prime number. All prime numbers are odd. What are factors, guys? What are factors?
numbers that divide the a given number exactly. ठीक है, divisible नहीं होते हैं. A factor of a number would be numbers that divide the given number. For example, if I say what are factors of 48, so I mean to say is numbers that divide 48 exactly. So वो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 6 8, right? 12 16 24 48. So these are factors of 48. We really get confused when this is what is a factor. A part of a number, I would say. A part of a number, I would say, isn't it? You are a factor of your family, a part of your family. समझा? It doesn't mean you divide your family, okay? हाँ? चलेगा? So they have a tendency to ask number of factors. Last 2 years they have asked number of factors. Not a clear question. Factor? 2 divides 48. 2 is a factor of 48. 3 divides 48. 3 is a factor of 48. 4 divides 48. 4 is a factor of 48. See, everything at the end comes to be divisibility. Divide means divisibility. And for last 3-4 years they have been asking a lot of questions on divisibility only, isn't it? So factor is really important for the same reason. Okay? So a factor of a number divides the given number exactly. Parallel logic. A factor of a given number, when divides that number, leaves remainder 0. Isn't it? When 48 is divided by 4, the remainder is 0. Because 4 is a factor of 48. Clear है? अभी ठीक है ना? चलिए. So they have been asking. देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ what are factors of 48, तो तुम तो easily, you can easily do it. But if I ask you a huge number, then it would be a real pain. So for example, I say find number of factors of 96000. You cannot keep on dividing, right? इसमें क्या करना है guys? Whenever you are asked, listen to me, whenever you are asked about number of factors, put that given number in terms of prime numbers. 96,000 को prime numbers की form में लिखिए. So don't draw that antenna, right? Do not draw that antenna. कैसे लिखेगा देखो? It is 96 into 1000. What is 96? 16 into 6 into 10 into 10 into 10. Agreed? Then 16 is what? 2 की power 4. 3 into 2. And 10 is what? 2 into 5. 2 into 5. 2 into 5. So how many 2s are there? 2 की power 4. 1, 2, 3, 4 more. Isn't it? So which is 2 की power 8 into well, how many 3s are there? 3 की power 1 and 5 की power कितना है? 5 की power 3. So kindly write down. Whenever you want to find number of factors of a number, put the given number in terms of prime numbers. Kindly write it. Put the given number in terms of prime numbers. कैसे करेगा? या तो एंटीना बना के करेगा, otherwise this is a good way of factorization here. Tables. Right? So whenever you're given a number like this, Sunil, you're given a number n, which is p to the power a into q to the power b into r to the power c. The number of factors are a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. ये जो पार्स है ना, इसमें 1 1 ऐड कर दीजिए and kindly multiply. Right? Can you write it as a kind of a formula? इसमें कितना है देख लेते हैं.
इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा दर्शिका? 8 + 1 into 1 + 1 into 3 + 1, come on, 9 into 2 into 4, 72 factors. So 96,000 have 72 factors. 72 numbers are there that divide 96,000. Past 2 years, past 3 years, they have put this question 2 times. Number of factors, right? So I hope that number of factors won't be a problem. What is he saying? Put the number in terms of prime numbers. Whatever are the powers of the prime numbers, right? Add 1, 1, 1 to them and multiply. You will get number of factors. But we expect better questions. You know, every year they are improving questions, isn't it? So if I say you are given a number n, look, you are given a number n, which is 2 की power 3 into 3 की power 2 into 5 की power 4. Guys, question 1, number of factors of n. Question 2, number of odd factors of n. Question 3, number of even factors of n. Question 4, number of prime factors of n. Question 5, number of composite factors of n. Number of factors of n that are multiple of 10. Sixth question. चलो करके दिखाओ, सारा करके दिखाओ जल्दी. I need all every answer. Come on, guys. Everyone has to answer all 6. Then only I will proceed. आराम से करो, डरो मत. करो करो आराम से, टेंशन मत लो. ठीक तो है, मस्त. यार तुम पेपर में थोड़ी ना उसका हेल्प करेगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, फिर लड़ाई करना. गुड. हाय, हाउ आर यू? डोंट वरी, हो जाएगा, थोड़ा टाइम दे दो. यू आर बिट लेट है ना. जल्दी कर. बुक कौन सी है? इसमें मतलब ऐसे भी है ना. ठीक है, केबीसी वाले का ना, ऐसा है. 1 से लेके 30 तक वहाँ बैठ जाओ कुछ. अरे खटाखट सॉल्व कर दे. ठीक है, आधे घंटे का टाइम लगा, खत्म कर. चल पीछे बैठ.
नहीं, गलत दे रहा है तुम लोग आंसर। ऊपर से डिस्कशन पैनल बिठा रखा है तुम लोगों ने। हाँ, सब एक गलत, सारा गलत। क्या बोल रहा है? पहले तो हो गया तेरा। ये पावर में 1 1 ऐड कर यार, मल्टीप्लाई कर, टेंशन मत ले। सारी पावर्स हैं जो, ये पावर्स हैं जो 3। व्हाट इज 3 + 1? ये टेंशन नहीं लेना है यार। दिस इज 3 + 1 is 4 into 2 + 1 into 4 + 1, राइट? कितना हो गया गाइस? 4 into 3 into 5, 60। पास तो बनाए हुआ मैंने, राइट? Then I'm surprised most of you are giving number of odd factors। बिल्कुल ठीक है, number of odd factors। सुनो, there is only one even number, 2, and its power, right? If you hide it, what is left is 3 to the power 2 and 5 to the power 4. Agreed? So number of odd factors, hide 2 and its powers, तो बचा 3 की power 2 and 5 की power 4, so it is 2 + 1 and 4 + 1, it is 3 into 5, 15 odd factors। Come on, हाँ, क्या चीज? इवन कितना है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है? 4। ए यार, ओए, यू कैन आस्क मी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। लसन, ऑड की पावर्स में 1 1 ऐड कीजिए एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है? Are you okay? All of you are okay? Factors are natural numbers. Total 60 बोल रहा है तुम, odd 15 बोल रहा है, 4 even है, 14 + 4 19, बाकी क्या है? Are you okay? Number of even factors 60 minus 15, 45. If you have got 15 odd factors, total are 60 factors, then even factors would be 45. Now it is your problem if you are thinking कि सर देखिए even तो सिर्फ 2 की पावर 3 है, but what is 2 into 3? 6 even. Odd into even is even, वो भी तो factors हैं। Are you missing those factors? Yes, you are missing those factors. और अगर तुम बोलता है वो 4 even factors हैं, वो कौन कौन से हैं? 2 4 8, चौथा कौन सा है? दिस इज कॉल्ड रॉन्ग बेसिक्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। नाउ यू मे थिंक कि सर देयर इज ओनली वन इवन नंबर, देन ऑल्सो so number of even factors are more than number of odd factors। yes, because even into odd is even and even into even is also even। समझा? तो number of even factors would always be more than number of odd factors। Now they may give you this as a statement, you know, n is defined as number of even factors, m is defined as number of odd factors, is m greater than m, n is n less than m, you know, they give you these kind of questions। समझा? तो ये ध्यान रखने का है, चलेगा? Now one knowledge gain, then number of prime factors of n। कितना प्राइम फैक्टर्स दिख रहा है इसका? कितना है टोटल? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर 3। कौन कौन से हैं? 2 3 एंड 5। खत्म। बाकी कॉम्बिनेशन में तो होगा ही नहीं। व्हाट इज अ power of a prime number? is a composite number। prime into prime is again composite। 15, what is 15? 3 into 5, but 3 is prime, 5 is prime, 15 is not prime यार। यही बेसिक गलत है तुम लोगों का, right? Then if I write a number like this, listen, I write number n which is equal to 3 to the power 2 into 2 to the power 4 into 5 to the power 3 into 7 to the power 4 into 11 to the power 18।
How many prime factors has this number? 2, 3, 5, 7, 11. 5 prime factors. Clear है? 5 prime factors. तो जितना prime number है, when you factorize a given number, number of prime numbers that are at the base are called prime factors. All right, guys, clear है? Then number of composite factors. How many number of composite factors are there? Composite कितना होगा? 57. Right? She says total are 60. Right? 3 are prime. 1 is neither prime nor composite. 56, not 57. Remember, 1 is neither prime nor composite. ये बहुत important question है. Prime are 3, total are 60. So generally people answer here as 57. Right? She gave an answer as 57. Most of you would give an answer as 57, but nahi. 1 is neither prime nor composite. Total number of composite factors are 56. This one question you may find it in the paper. इनमें से कोई आ सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि पहला तो आ चुका है. Number of factors they have discussed it 2 times in past 3 years. You may get one of these now. And the 6th, number of factors that are multiple of 10. What is 10, guys? What is 10? Sir, 10 is 2 into 5. Right? 10 is 2 into 5. So listen, आपके पास number क्या था? Your number was 2 की power 3 into 3 की power 2 into 5 की power 4. So take 2 common, 5 common. What are you left with? 2 की power 2 into 3 की power 2 into 5 की power 3. Right? Now any factor of this number would be a multiple of 10. Isn't it? So how many factors are there? Sir, 2 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, right? Which is 3 into 3 into 4. कितना बन गया guys? 36. There are 36 factors that are multiple of 10. Remember this 6 questions. कोई ना कोई आएगा पक्का. Only good thing about being with me is questions कम. कराए हुए आते हैं. मैं आज ही तुम्हें प्रूव करूंगा साथ में. ठीक है, लास्ट ईयर ही 3 या 4 क्वेश्चन तो आज की क्लास में से ही हो जाएंगे. ये क्लियर है? नाउ आई एम डन विद फैक्टर्स. राइट? दिस इज कॉल्ड फैक्टर एंड प्राइम नंबर. Brilliant. That's a great idea. Now I can do it. What is a even factor beta? A multiple of 2. So why can't we do this? इसमें से 2 common ले लो. It is 2 की power 2 into 3 की power 2 into 5 की power 4. Now factor of this number would be 2 plus 1, 2 plus 1, 4 plus 1, 3 into 3 into 5. लो 45 बन गया. Same as this. Isn't it? Because you wanted an even factor, so you took 2 out. So once you take a 2 out, then every factor inside that number would be a multiple of 2, that is even number. Clear? That is also a great idea. Good question. Thank you. ये पेज ध्यान में रखना. Remember my words. तुझे ठंड लग रही है? एस्किमो बन गई तू तो. मेरे को लगा मुझे ही ठंड लगती है. Everyone is nowadays in the t-shirts. Old guy. क्या फोटो नहीं अच्छा आ रहा क्या? ठीक करो. बुलंदशहर के लोग बड़े दिनों बाद आए. हाँ, लेट कमर की भी बड़े बड़े तगड़े लेट कमर हो तुम लोग, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए. Now once you know numbers, what exactly are numbers? Listen, and once you know factors, now we talk about remainders. The key
द की, द पेपर क्वेश्चंस, पिछले साल 6 से 7 क्वेश्चंस यहां से थे। Right now, why divisibility rules are important? Because they have been asking questions on remainders. Their favorite topic is remainder. Every question is remainder. Right. So we are going to crack this code today. And first, what is divisibility rule of 2? How do you know a given number is divisible by 2? Number should be even, isn't it? Even number is always divisible by 2, which is exactly divisible. Listen, what do you mean by exactly divisible? Remainder is 0, right? So keep this thing in mind. An even number is exactly divisible by 2. Whenever you divide a number by 2, possible remainders are 0 and 1. When the remainder is 0, the number is even. When the remainder is 1, number is odd. That is the reason even numbers are written as 2 times k, where k is a natural number, right? And odd numbers are written as 2k plus 1, a multiple of 2 plus 1. ठीक है भाई, इतना बढ़िया सूट पहना हुआ यार तूने, यू लुक गुड, अच्छा सूट पहना हुआ, गुड। अरे आई वांट टू वियर सूट्स यार, मेरे फिट ही नहीं आता है पुराना वाला आता नहीं है, नया वाला कोई सिलवाता नहीं है। जिम से क्या होगा, सारी उम्र आई हैव जिम, आई लेफ्ट इट 4-5 years बैक, देन यू गेन इट। बेस्ट इज बी हैप्पी, ईट वेल इतना टेंशन लो, क्या फायदा है? Whole my life I've been running, gymming, done good, no issues. Now I want to be plump and eat well and drink well. Water, isn't it? Drink का सुनते तुम लोगों को गलत फीलिंग्स क्यों आती हैं? है ना? सोच देखो कितनी गंदी है तुम्हारी, हैं? Divisibility rule of 3, guys. Yes, I want to talk about this extensively. Sum of the digits is a multiple of 3, isn't it? So whenever we do that, for example, I say 9, 2, 7, 3, 1, 2. Is this number divisible by 3 or not? Listen, guys, just pay attention, please. Give me some time, right? So we say 9 plus 2 is 11, 11 plus 7 is 18, plus 3 is 21, plus 1, 22, plus 2, 24, right? So you say sum of the digits 24. No, I say make a single digit number. What is 2 plus 4? 6. Make a single digit number. So if a single digit number, sum of numbers is a single digit number and it comes out to be 3, 6 or 9, the number is exactly divisible by 3. Right? A single digit number comes out to be, if a sum of the digits is a single digit number and it comes out to be 3, 6 or 9, the number is exactly divisible by 3. चलेगा? Okay है? All of you? Perfect. And then listen, whenever you divide a number by 3, what are the possible remainders? 0, 1 and 2. Possible remainders. See, I really believe in remainders. But the best part of divisibility rule of 3 is that this gives you remainders as well. For example, देखो इधर, kindly pay attention. If I say 9, 2, 7, 3, 1, 2, 2. What is the remainder when this number is divided by 3? Now addition of this number comes out to be 26. Just check out. 2 plus this is 11, 18, 21, isn't it? I have added it. Here 24 tha plus 2 is 26. What is 2 plus 6? 8. 8 when divided by 3, remainder 2.
So divisibility rule of 3 also gives you remainders. That is the reason divisibility rule of 3 has been asked 7 to 8 times since CSAT has been incepted. 7 to 8 times. It gives you remainders as well. Ab to people those who were late, you can relate it, don't worry. Ye clear hai? But then, you know, sum of a number, right? If you want to sum a number, what is the extent of summation that you can do in an exam? For example, if I write, is this number divisible by 3 or not? If not, what is the remainder when this number is divided by 3? बताए अभी ऐड करेगा कोई? देखिए दर्शक, तुम ऐड करो करो, तुम्हें आता ही है। इग्नोर द नॉट द क्वेश्चन। द बेस्ट रूल इज नॉट द सम ऑफ द डिजिट्स, ये तुम्हें गलत सिखाया गया है, राइट? बेस्ट रूल इज, लिख लीजिए, इग्नोर multiples of 3. Ignore stress. Oh, नहीं, ignore multiples of 3. Ignore expectations. ये मत लिखना यार, sorry. Only लिखो ignore multiples of 3. समझा? Ignore multiples of 3. Now what do I mean by this? See the beauty. इधर देखो, पीछे जाते हैं, ये हम लोग चेक कर रहे थे, ये देखो, ये चेक कर रहे थे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इग्नोर। 2 प्लस 7 इज 9, मल्टीपल ऑफ 3, इग्नोर। 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इग्नोर। 1 प्लस 2 इज 3, मल्टीपल ऑफ 3, इग्नोर। पूरा नंबर इग्नोर्ड, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सेव्स a lot of time. देखो, 9 is a multiple of 3, 2 plus 7 is a multiple of 3, 3 is a multiple of 3, 1 plus 2 is a multiple of 3, बचा क्या? 2, रिमाइंडर 2। ज्यादा बेटर है ना, सम करने से तो अच्छा है। इधर देखो, लेट्स सी, ये देखो, 9 is a multiple of 3, 7 plus 8 is 15, a multiple of 3, 1 plus 5 is 6, multiple of 3, 6 is a multiple of 3, 3 is a multiple of 3, 2 plus 1 is a multiple of 3, 5 plus 1 is a multiple of 3, 6 is a multiple of 3, 7 plus 8 is a multiple of 3, right? 1 plus 1 plus 1, 3 a multiple of 3, ignore. 3 and 3, ignore, right? 6 and 6, ignore. 7 and 9, ignore. 3, ignore. 2 plus 1, ignore. 7, 7, 7, 3 times 7, ignore, right? 8 plus 1, 9, ignore. 1 plus 5, ignore. 6, ignore. 3, ignore. 2 plus 1, ignore. बचा क्या? 4. 4 when divided by 3, remainder 1. Whenever you divide this number by 3, remainder is 1. खत्म, over. This is divisibility rule of 3. बेटर है, इग्नोर। ठीक है, काइंडली राइट इट। आशीष, ठीक है? एंड रिमेंबर टू इग्नोर स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस, रॉन्ग प्रॉमिसेस। इग्नोर। इलॉजिकल पीपल क्या होते हैं? योर क्रेजी लैंडलॉर्ड माइट नॉट बी क्रेजी. Maybe you think he is crazy or she is crazy. Huh? Oh my God. The entire word is crazy, isn't it? Which means you are probably illogical. Ignore her. It's like, if whatever you think is not right, na? It's like you think he is illogical. It's like Aishwarya Roy thinks she is beautiful. But that's like, you know, too much. Whosoever you are, you cannot say I'm beautiful. You cannot say I'm intelligent. And you cannot ever say I'm hardworking. Rickshaw wala is hardworking. Fruit seller might be hardworking. When you say, I really studied 8 hours a day, that is the reason I think I am hardworking. But out of 8 hours, you may be only studying 2 hours. Isn't it? So these things do not have any parameter. One day you would call me also illogical. Very poor, very poor. Though my children call me illogical, so don't worry. Right? ये clear है? चलेगा?
right? So that is the reason they give you divisibility rule of 3, because now you understand that this is a rule associated and not many of you knew it before. Chalega? Then what is divisibility rule of 4? Rule of 4. Yes, last 2 digits are exactly divisible by 4, or the number ends with 2 zeros, or the number ends with 2 zeros. Ends with 2 zeros, sorry यार. अच्छा, इसका फंक्शन नहीं है क्या? वेट, number end with 2 zeros. So whenever you want to divide a number, whenever you want to find remainders, important is again remainders. Remainders, whenever you divide a number by 4, possible remainders are 0, 1, 2 and 3. Set of remainders. Zero, 1, 2 and 3. ठीक है guys, ठीक है. Now listen, I say I can frame any number 1 1 3 2 1 1 5 6 3 2 7 6. Is this number divisible by 4? Yes, it is, because you don't see the whole length and the breadth of the number. 76. 76 is divisible by 4, so the number is divisible by 4. So you don't bother about the whole length and the breadth of number. समझ रहे? Right? I say 19798900. Is this number divisible by 4? Yes, it is, because it is ending with 2 zeros. And when it is divisible by 4, what is the possible remainder? 0. Possible remainder is 0. चलेगा? पक्का? Right? So if I write a number n, which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 up till 50th digit, what is the remainder when this number is divided by 4? Up till 50th digit. आंसर क्या है? करो फिर, तभी तो क्वेश्चन दिए. करिए कैलकुलेट. ए यार, कम ऑन जल्दी. Two. 2 is the remainder. ए यार, तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है, तुम अपना करो. 2. डिजिट काउंट करके दिखाओ. चलो देखना. अप टिल 50 डिजिट बोला मैंने. फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th digit is 1. 11th digit is 0. 12th is 1. 13th 1. 14th 1. 15th 2. So you don't have to write the number till 50. 50th digit चाहिए मुझे, which means you need last 2 digits. You need last 2 digits.
So देखना guys, from 1 to 9, how many digits are these? 9 digits. From 10 to 19, how many digits are these? 20 digits. So when the number over here ends with 19, there would be 29 digits. There would be 29 digits. Are you getting it? And then if I write 20 to 29, it is again 20 digits. I think means what? आपका आंसर गलत है. Ten is a 2-digit number, 11 is a 2-digit number, 12 is a 2-digit number, and I said 50th digit. I did not say go till 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 digits. 10, 2 digits. 11, 2 digits. 12, 2 digits. So I have to go till 50th digit, not 50 as a number. That is the reason you are getting 2 as your remainder. All of you. तुम्हारी काउंटिंग गलत है और यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और सबने आंसर 2 लिखा हुआ था. तुम्हें रिमाइंडर्स आते हैं. अरे 50 डिजिट बोल रहा है यार, वो 50 तक थोड़ी ना जा रहा है. So now listen, when you are writing this number as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 till 29, how many digits have you written? You have written 49 digits. देखिए 9 digits 1 to 9, 10 to 19, 20 digits, 20 to 29, 20 more digits. This is what I meant. So next digit has to be 30 ka 3 only, isn't it? Because next digit has to be only a single digit, so 3 only. So the number is ending with 93. A 50-digit number would end with 93. That is the reason this question was framed, divisibility rule of 4. Because I wanted last 2 digits. So last 2 digits क्या हैं? 93 when divided by 4. Remainder is 1. गलत है आप सबका आंसर. मजाक नहीं है वो पेपर. इट्स अ वेरी वेल फ्रेम्ड एग्जाम. एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बनाया गया है. ये मार्केट में खड़े होकर तुम लोग बोलते हो ना आरसी तो मेरे से हो जाएगा. मजाक नहीं है. 100 लोगों ने मिलके अगर वो 80 क्वेश्चन बनाए हैं ना, राइट, तो तुम लोगों की सोच से ऊपर बनाए हुए हैं. आई फील पिटी, frankly telling you, UPSC aspirants, those who are not preparing for CSAT, I feel pity on them and literally shame on them because they have not even seen the paper. Once they sit for 2 hours and see it ना, I can promise you, तुम में से कोई भी बंदा लास्ट ईयर का पेपर, चाहे तुमने क्वेश्चन पेपर देखा हो, तो भी 1/3 नहीं कर सकता है. नहीं कर सकता है 2 घंटे में. And I feel pity really. Because aptitude, reasoning, reading comprehension requires practice. It is not history. It is not geography. तुम नोट्स बनाएगा, जाके पढ़ लेगा, क्वेश्चन में टिक मार्क कराएगा. Solving, रियल टाइम सॉल्विंग. ये देख लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और इस तरह के 10 क्वेश्चन दे चुका है. एंड द बेस्ट पार्ट, पेपर इज रिपीटेटिव. क्वेश्चंस की सीरीज रिपीटेटिव है, फिर भी तुम लोगों से नहीं होता है. And rather than saluting them, because they want people with good aptitude, and everyone, if you are also a company, you would also want people with good aptitude skills. They are a hiring agency. They are not because you have seen a serial or 2 on YouTube and on Netflix. That is the reason you are inspired to prepare for UPSC. It's beyond you then. Because you even don't understand that paper is tough. It's a very logical paper. Every question is framed beautifully. Mixture of 2 or 3 concepts. तुम नहीं समझ पा रहा है क्योंकि तुम किसी सीनियर से 5 साल पुराने बंदे से पूछ रहा है, जब वो सीसेट बहुत इजी होता होगा. बट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड. तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें करना है. उसको आता था, नहीं आता था, तुम्हें उससे क्या लेना है. I literally feel pity. I go many a times I'm in the market, people are saying, RC तो हो ही जाएगा, I am convent educated. To hell with you. They want convent educated, they would write it. We want convent educated people. Do you really think गांव से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है? Last year 3 of my students from villages, they have been selected.
यार ये इंजीनियर्स का पेपर है यार, लास्ट ईयर 10% बच्चों से पेपर क्लियर हुआ है, 8 से 9 आईआईटी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, उनका नहीं हुआ है। आईआईटी को तुम वो मानते हो ना, मतलब एक वो है बेंचमार्क है, राइट, ये तो बहुत क्लासी बच्चे होंगे, ये तो मैथ्स आता है पेपर में, मैथ्स है ही नहीं, ये है वो। काउंटिंग की सिंपल सी प्रॉब्लम थी, 50 डिजिट तक जाना था, तुम 50 तक ले गए, नंबर 50 तक लिख के उसको एंडिंग विद 50 किया, डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 2, ऑप्शन नंबर 1 वाज 2। फीलिंग गुड, वाओ मेरा आंसर आ गया। बी सीरियस अबाउट दिस इज नॉट अ जोक। 1/3 इस पेपर को क्लियर करने का एक ही राज है, यू आर टॉप ऑफ द टॉप। 1/3 लेके आने का भी ये, आई विश यू शुड एक्चुअली हैव प्रेड कि इट वाज नॉट अ क्वालिफाइंग पेपर, वो बेटर था, it could have been better because you guys would have worked very hard onto it. And obviously yaar, if it becomes qualifying paper, do you think they are going to give you easy paper? Why? जब क्वालिफाइंग है तो टफ देगा ना यार, सिलेक्शन थोड़ी ना करने, राइट। चलिए, व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 गाइस? नंबर शुड एंड विद 0 or 5. Any number ending with 0 or any number ending with 5 is exactly divisible by 5. Agreed, this is easy. And possible remainders are, yes, remainders 0, 1, 2, 3 and 4. So I say, देखिए, जब आप 2 से डिवाइड कर रहे थे possible remainders were 2. When you were dividing by 3 possible remainders were 3. When you were dividing by 4 possible remainders were 4. When are you dividing by 5, possible remainders are 5. So if you divide by n, possible remainders are n, right? From 0, 1, 2, 3 till n minus 1. ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे थे, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या थे? 0, 1, 2, 3, 4. 3 से डिवाइड कर रहे थे, पॉसिबल रिमाइंडर्स वर 0, 1, 2. n से डिवाइड करोगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 अप टिल n minus 1. n minus 1, 0 से n minus 1. ये मोबाइल को नीचे रख लो, इसको बंद करके पीछे रख लो, पढ़ाई कर लो। चैटिंग वैटिंग करने बाहर जाके कर लो, डबल काम में कोई फायदा नहीं है। एंड आई मस्ट टेल यू, ओनली थिंग आई डोंट अप्रिशिएट इन माय क्लास इज पीपल यूजिंग मोबाइल, बस, और कोई टेंशन नहीं है मेरे को। तुम्हें फोन आए बाहर जाके सुन लो, चैटिंग करनी है बाहर जाके कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दो काम मत करो, ना इधर की सक्सेस मिलेगी ना उधर की, एक चूज करो, उसमें सक्सेसफुल हो जाओ, समझा? चलो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है गाइस? रूल ऑफ 6 is 2 into 3. 6 is 2 into 3. So rule of 2 and rule of 3, right? What is rule of 2? Number should be even. What is rule of 3? Sum of the digits is a multiple of 3, right? So what is a multiple of 6? Even number whose sum of the digits is a multiple of 3, right? An even number whose sum of digits is a multiple of 3 would be a multiple of 6. देखो ना, 6 का मल्टीपल हमेशा इवन होगा ना। 6 का टेबल देखो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, even, 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 even. And sum of the digits is a multiple of 3. चलेगा? पक्का? So I give you a question. I say I have a number n which is equal to 293 into 361 into 439 into 599 into 633. What is the remainder when this number is divided by 6? What is the remainder when this number is divided by 6? तीन क्लास पहली में तुम्हें दे रहा हूं, नंबर्स एकदम मस्त करेंगे। 2 क्लासेस रीजनिंग की दे रहा हूं, कैलेंडर एंड क्लॉक।
इस वीक में खत्म करेंगे 5, टारगेट ओरिएंटेड करेंगे. लेट्स फिनिश इट ऑफ गाइस, वी स्टिल हैव टाइम, बट यू हैव टू वर्क हार्ड. यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2020 की वॉज अ वेरी गुड पेपर एंड उसके बाद से पेपर टफ हो रहा है. जस्ट वर्क हार्ड, डोंट गो बाय व्हाट पीपल से. आशीष बाबू आंसर बोलिए. ब्रिलियंट गर्ल, करके देखेगी. ये पुराना अलग था, ये अलग है. ब्रिलियंट, आई ऑलवेज न्यू. देखो यार, had we been in junior classes, we would have multiplied all the numbers and then divided by 6. Agreed? सही बोल रहा हूं मैं? Agreed guys? है ना? तभी वही करते हैं हम, बट यहां नहीं. राइट? सो क्या करोगे? ट्राई डूइंग दिस. पहले सबको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करो, फिर रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो. चलो डू इट. ट्राई. जा रहा है तुम लोग? जाओ. यस गाइस, 3 राइट. अभी रिमाइंडर में भी इट इज रियली इंपॉर्टेंट. फॉर रिमाइंडर ऑल्सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट you should apply divisibility rule. Now please pay attention. Let's talk number wise. 293, is it a multiple of 2? No sir. Is it a multiple of 3? No, it is not a multiple of 2, not a multiple of 3, right? So find a multiple of 2. 292, this is the even number. Is it a multiple of 3? No. 292, sum of the digits here, not a multiple of 3. So it's a multiple of 2 but not a multiple of 3. फिर से 2 पीछे चलो. 290, is it a even number? Yes sir. Is it a multiple of 2? No sir. फिर 2 पीछे जाओ. 288 is a even number also. It's a multiple of 3 also, right? What is the difference between these two numbers? 5. Remainder is 5. See, odd number tha, I picked up a even number. Even number is always a multiple of 2. Then even number पे मैंने check किया whether it's a multiple of 3 or not. How many numbers I would have to check? Maximum 3, because third number has to be a multiple of 3.
एग्रीड, पहला नहीं हुआ दूसरा नहीं हुआ तो थर्ड तो होगा ही होगा ना. इवन मल्टीपल ऑफ 3 एज अ मल्टीपल ऑफ 6, सो दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6. दोनों का डिफरेंस दे दीजिए, रिमाइंडर 5. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. देखो 361 not a multiple of 2, not a multiple of 3, isn't it? Not a multiple of 2, not a multiple of 3. Then I say 360. 360 is a multiple of 2. It's a multiple of 3. Multiple of 6. Remainder 1. 361. So 360. Okay. So 1 remainder. Agreed. Rather than making this antenna and dividing by 6. No. तुम्हें divisibility rules आते हैं. You know the divisibility rules, right? Then 439, right? 438, even number also, multiple of 3 also, remainder 1, isn't it? Remainder 1. 599 would be remainder 5. I promise you. Check karna, is it remainder 5? 599, is it remainder 5 divided by 6? Check karo, because you would go 1 back, so it is 598. Even number, not a multiple of even number, not a multiple of even number, not a multiple of 3. 594 is a even number and a multiple of 3 also, remainder 5. And then listen, 633. Now listen to me. 633. 633 is a multiple of 3, but not a multiple of 2. Then go 3 back. Multiple of 3 minus 3 is a multiple of 3 again. So I say 630. It's a multiple of 3 also, multiple of 2 also, remainder 3. That also is a proposition. If you get a multiple of 3, then you only need to find a multiple of 2. Agreed. So that also is a good proposition. Check it. Now listen to me. 5 into 1 into 1 is 5, and 5 into 5 is 25. Listen, अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. 25, आ जाओ यार. 25 when divided by 6, remainder is 1. Do not multiply, keep on multiplying, right? Keep on, see, you checked out 25 when divided by 6, remainder 1. What is 1 into 3? Answer is 3. Over. Because if you are dividing a number by 6, your possible answers had to be 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Remember, this is the process for remainders. First logical process for remainders. Keep this thing in mind. ये 3-4 बार आ चुका है. We will do it again and again. भाई तुझे समझ आया? तू तो था ही नहीं, फिर समझ कैसे आया? अच्छा नहीं बोले, हम सोचे हाँ बोले, सॉरी यार. सुनो एक ही चीज बताता हूँ, सुनो यार, एक ट्राई कर लो, काइंडली ट्राई वन. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n which is 673 into 739 into 899 into 513 is divided by 6? जल्दी बताओ, कम ऑन. गलत नहीं होना चाहिए. पहले का रिमाइंडर इज 1. 673 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. एक कम कर लो, 672 अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, रिमाइंडर 1. Getting it? So what did I say? 673 not a multiple of 2, not a multiple of 3. एक पीछे चले जाओ. So even number आ गया 672. Then check, is it a multiple of 3 also? So even number which is a multiple of 3 is a multiple of 6. So remainder is 1. ठीक है? Then 739, 738. Again it's a even number. It's a multiple of 3. Yes sir. Remainder 1. 7 plus 3 plus 8. ठीक है? Then 898, even not a multiple of 3, right guys? 896, even not a multiple of 3.
8 9 4 even and a multiple of 3 remainder 5 तीन ही चेक करना है अपने राइट एंड देन 5 1 3 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3 5 plus 1 plus 3 it's a multiple of 3 now 3 पीछे चले जाओ 5 1 0 a multiple of 2 and a multiple of 3 remainder 3 15 15 से 6 गया रिमाइंडर 3 never do it I can give you a question and prove you wrong हो सकता है नहीं भी हो सकता keep this in mind no don't make your own rules divisibility is the most tricky thing and the dangerous thing you may be getting it in 2 questions but it may not be right I can do it I can prove you wrong नहीं करना बेटा जब हमारे पास प्योर मैथड है क्यों करना है you know we made you know most of the teachers made CSAT as a trick thing ये ट्रिक करो जीएस को भी इन्होंने क्या किया एलिमिनेशन कराएंगे लाखों घंटे यूट्यूब पे पढ़ा एलिमिनेशन मेथड लास्ट ईयर एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया दे आर बियॉन्ड यू वट एवर यू थिंक दे आर 2 स्टेप अहेड ऑफ यू बिकॉज दे डोंट वांट टू सिलेक्ट यू they want to reject you because everyone wants to be an officer and if you want to be an officer you have to exhibit qualities of an officer first thing is officer का analysis बहुत strong होता है तुम्हारा analysis क्या है वो पेपर बताता है तुम्हारा राइट नेवर गो बाय प्री कंसीव्ड नोशन लास्ट ईयर क्या हुआ अरे सर वो अर्थमेटिक तो आता ही है अर्थमेटिक के 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे 5-6 और हो जाएंगे हो जाएगा अर्थमेटिक नहीं दिया मेरी मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब छोड़ गए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 5 क्वेश्चन दे दिए मेरी मर्जी नंबर सिस्टम तो सर छोड़ ही देते 3-4 ही तो क्वेश्चन आते हैं 12 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के मेरी मर्जी so please don't go to the paper with preconceived notions that GS test series or CSAT test series exhibit that's the reason I don't believe in test series because they make a notion right so are you sure this time they are going to give one statement is true two statements are true in GS they may go to elimination method again so why are you going in an exam with a preconceived notion that this is what I am going to do this is where you get killed before the exam go with strong basics bas khatam समझा चलिए divisibility rule of 7 आज अच्छा रूल बनाता हूं मैं तुझे बहुत बेटर रूल बताता हूं उससे राइट रिमेंबर द सीरीज 1 -2 -3 -1 2 3 remember this series now if you want to check whether a given number is exactly divisible by 7 or not right suppose I say is this 4949 exactly divisible by 7 4949 exactly divisible by 7 write it like this below the series starting from the left hand side right what is 4 ones are 4 what is 9 into -2 -18 what is 4 into -3 -12 9 into -1 is -9 if you get your answer this is minus of 35 if you add it answer is minus of 35 either if your answer is 7 ka multiple or 0 I should not even write 0 because 0 is a multiple of every number the given number is exactly divisible by 7 this is the beauty of this rule 1 -2 -3 -1 2 3 इतनी फ्री क्लासेस डाल के मैं इतनी बार ये रूल यूट्यूब पे डाल चुका हूं देन ऑल्सो यू हैव नॉट सीन इट सी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन इन लास्ट ईयर आई मेट अ गाय हु हैड अटेंडेड माय 5 नंबर सिस्टम की क्लासेस ऑन यूट्यूब and 3 classes on permutation and combination and he sent me a message thanking me sir I cracked this paper because of these 8 classes brave guy सर इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है रूल में इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज मोर देन 6 व्हाट वुड यू डू
repeat the series, right? So it is 1 minus 2 minus 3 minus 1 2 3 1 minus 2 minus 3 minus 1 2 3 1 minus 2 minus 3 minus 1 2 3 कितनी बार लिख लो, beauty, right? For example, if I say is this number 1 0 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 1 exactly divisible by 7? जिसको तो ये रूल नहीं पता है वो तो पूरा डिवाइड करेगा, isn't it? Obviously that you have to divide it. जिसको ये रूल पता है, देखना 1 1 सा 1, ये सारे 0 बन गया, इधर -1 1 and -1 is this number is exactly divisible by 7, खत्म. And if you don't know the rule, लो 7 से डिवाइड कर लो. एंड यू वांट कि सर ये आया हुआ है 2021 के पेपर में, अभी देता हूं तुम्हें कुछ. I'll form a Telegram channel with you, और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं तुम्हें ये सारी भी पीपीटीज जो है वो मैं सेंड कर दिया करूँगा. राइट नाउ तो लेट मी फाइंड दिस PYQ. ऐसे 2021 ना, ये रहा. He says, see the question. He says the number 3798125 3798125 P369 is exactly divisible by 7. Is exactly divisible by 7. What is the value of digit P? Options are 1 6 7 9 1 6 7 9. मेरा क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2021 का है. कैसे करोगे, और कुछ हो ही नहीं सकता. जिसको रूल नहीं आता क्या करोगे?
पेयर 3 का नहीं होता कभी भी, पेयर 2 का होता है। पेयर नहीं बोलते, फिर इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 के ट्रिपलेट भी बनाओगे, ठीक है, तो व्हाई डोंट यू डू दिस? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, दिस इज 3 माइनस 14 माइनस 27 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 2p माइनस 9 माइनस 6 प्लस 18। चेक करना क्या आ रहा है। 3 is positive, 3 plus 2 is 5, 11, 11 plus 5 is 16, 16 plus 18 comes out to be 34. नेगेटिव में देखना, 14 plus 20 is 14 plus 20 34, 34 plus 7 is 41, 41 plus 8 comes out to be 49, 49 plus 9 comes out to be 58, 58 plus 6 comes out to be 58 plus 6 is 64, minus 64 minus 2p. Right, so he's saying is minus 30 minus 2p should be a multiple of 7. Minus 30 minus 2p should be a multiple of 7. ऑप्शन में से p की वैल्यू पुट करना। When you put p is equal to 1, minus 30 minus 2 is minus 32, not a multiple of 7. Right? When you put 6 minus 30 minus 12, minus 30 plus minus 12 is minus of 42, a multiple of 7. Answer is 6. See the beauty. पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। Who said this is a basic question? बुलाओ किसी, कहां, कौन सी किताब में, RS अग्रवाल में दिया, कौन सी किताब में दिया हुआ ये? There is no book which has these kind of questions. This is the beauty. है बेसिक है बिल्कुल बेसिक है, पर कोई किताब नहीं है जिसमें ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लगा, आराम से क्वेश्चन होगा। इफ यू पुट p is equal to 7, minus 30 minus 14 minus 44 is not a multiple of 7. If you put p is equal to 9 minus 30 minus 18 is minus of 48 is not a multiple of 7. सिर्फ p is equal to 6 पे आ रहा है। और दूसरा तरीका है, पहले वैल्यू पुट करो फिर डिवाइड बाय 7 करो। यू नो हाउ टफ इट इज? पूरा पेज खा जाएगा। यू डोंट हैव स्पेस, स्पेस ही नहीं है। So remember the series 1 minus 2 minus 3 minus 1 2 3. आंसर क्या है? माइनस 30 माइनस 2p. इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7. मैंने p की वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी। When I put p is equal to 1, देखना माइनस 30 माइनस 2 is माइनस ऑफ 32. मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आ रहा, so 1 is not a right option. When I put p is equal to 6, minus of 30 minus of 12, minus of 42 is a multiple of 7. P is equal to 6 पे this becomes a multiple of 7, which means p is equal to 6 is the answer because the number is exactly divisible by 7. तुम्हें लग रहा है पिछले साल का टफ था? तुम पेपर उठा के देखो, एक बार बैठ के देखो 2 घंटा, तुम्हें पता चलेगा। 2020 का ही देख लेना। सक्सेस रेट इन 2020 was 40% people clearing it, right? And last year success rate was 10% people clearing it. सक्सेस रेट कितना डिफाइंड हो गया? 15-16 में नियरली 70% पीपल वर एबल टू क्लियर इट बिकॉज पेपर वॉज वेरी इजी। बट वाई वुड दे सस्टेन इजी पेपर ना यार? पेपर तो चेंज होगा ही होगा। इफ यू गो बैक एसएससी, बैंक, पीओ, सारे पेपर टफ हो गए। पहले वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे, अब नोबडी आस्क्स यू डायरेक्ट क्वेश्चन बिकॉज वी एज अ कोचिंग इंडस्ट्री हैव इवॉल्व्ड ना, सो पेपर वुड आल्सो इवॉल्व। तुम कोचिंग ले रहा है तो उनको भी पता है तुम कोचिंग ले रहा है, सब कुछ किया हुआ है, तो कुछ बेटर ही देगा ना यार। अंडरस्टैंड दिस, है ना? चलिए नेक्स्ट करें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 और the number ends with 3 zeros.
or the number ends with 3 zeros. So divisibility rule of 4 क्या था? Last two digits are exactly divisible by 4 और the number ends with 2 zeros. Divisibility rule of 8 क्या हो गया? Last 3 digits. So basically सुनो यार, ऐसा कुछ है. What is 4? It is 2 square. तो बोलता है last 2 digits, right? ये सेम है. What is 8? 2 cube. So last 3 digits, isn't it? ये वाला पार्ट. So what is divisibility rule of 16? Last 4 digits are exactly divisible by 4 or the number ends with 4 zeros. What is divisibility rule of 32? Last 5 digits are exactly divisible by 32 or the number ends with 5 zeros. I tell you, someday they're going to give you a question. He says a number is given, number is divided by 128. Now what is 128? It is 2 to the power. What is 128? 2 to the power 7. And he would end the number by 7 zeros. और लोग छोड़ के आ जाएगा क्वेश्चन. But you know what is the divisibility rule of 128? 128 is 2 की power 7. Last 7 digits are exactly divisible by 128 और number ends with 7 zeros. तो ध्यान में रखना ये 2 की पावर्स का ये रूल है. You would find it someday, देखना. बढ़े आगे. Divisibility rule of 9. Rule of 9, guys. Yes. Sum of the digits is a multiple of 9. Kindly write it. Sum of the digits is a multiple of 9. Sum of the digits is a multiple of 9. है ना? Again, whenever there is SUM, sum of digits, so it is also can be complemented as ignore multiples of 9. Ignore multiples of 9. You can write it. Ignore multiples of 9. Right? For example, if I say 9, 6, 3, 7, 2, 4, 5, 5, 4, 0, 0. What is the remainder when this number is divided by 9? Right? So rather than 0. Ignore multiples of 9. Ignore multiple of 9. 6 plus 3, 9. 7 plus 2, 9. 4 plus 5, 9. 5 plus 4, 9. 0 and 0. The number is exactly divisible by 9. तो सम करने की जरूरत नहीं है. Right? Or they have this inclination with 9 ना यार. देखो, what is the remainder when 1, 1, 1, 1, 1, 3 is divided by 9? What is the remainder when 1, 1, 1, 1, 1, 3 is divided by 9? इसको सम करो. 1 plus 1 plus 5 plus 1. See, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5 plus 3, 8. Remainder 8. खत्म. डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. Sum of the digits. If it's a multiple of 9, ignore. If it's not a multiple of 9, that is the remainder. समझ रहे हो? That is the remainder. Simple. So मैं एक abruptly number लिख लूँ. 7, 3, 1, 1, 4, 6, 5, 7, 1, 1, 3, 2, 1, 5, 6, 3, 2, 9, 7, 8, 1, 1, 5, 3, 1, 7, 9, 3, 3, 2, 1. What is the remainder when this number is divided by 9? Now ignore multiples of 9 again. देखो बहुत easily ignore हो जाएगा. देखो 7 plus 2 plus 2 9, 3 plus 6 9, right? 5 plus 4 9, 7 plus 1 plus 1, ignore, right? And then listen, 5 plus 1 plus 3 is 9, isn't it, guys? 6 and 3 gone, 9 otherwise gone, 7 and 2 gone, 8 and 1 gone, है ना? And then 5 3 1 gone, or 7 plus 2 gone, and 9 gone, and 3 plus 3 plus 3 is 9. बचा क्या देखो? Remainder 1.
रिमाइंडर 1. पेयर ट्रिपलेट्स बना बना के काटते जाओ, मल्टीपल ऑफ 9 इग्नोर करते जाओ, रिमाइंडर वुड बी देयर. क्लियर है ना? टेबल ऑफ 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Agreed? Now 18, 1 plus 8 is 9. Yes. रिमाइंडर है, दैट्स इट, सिंपल, इजंट इट? 9 से छोटा हुआ यही होगा. अगर वही होता 11, इफ आई सेड 11 होता, सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, व्हाट इज 1 plus 1? 2, रिमाइंडर 2 हो जाता. समझ रहे हो? राइट. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इज ऑलवेज सम ऑफ द डिजिट्स. सम काम आता है. अब देखना टेबल ऑफ 9, लिसन टू मी. टेबल ऑफ 9, 18, 1 plus 8 is 9, 27, 2 plus 7 is 9, 36, 3 plus 6 is 9, 45, 4 plus 5 is 9, which means table of 9, every single digit is a multiple of 9. Agreed? Which means if a given number is a multiple of 9, its single digit sum should be 9. Agreed? Now I say, listen, I say there is a 100 digit number and it is multiplied by 9. What is the sum of its digits? A 100 digit number is multiplied by 9. What would be the sum of its digits? 9. Remember, if it is multiplied by 9, it's a multiple of 9. अगर multiple of 9 बन गया, उसका single digit sum क्या होगा? 9. Kindly write it. This is a question that is coming. याद रखना ये चीज. Come on. ठीक है. मैं क्या बोल रहा हूँ, एक 100 डिजिट नंबर है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, which means it's a multiple of 9. And Rishi sir said every multiple of 9 single digit sum is 9. 9 का टेबल याद है? 9, 18, 27, 36, 45, 54. Single digit number was always 9. So remember, a multiple of 9 single digit addition is 9. Okay, so 100 digit number से confused मत हो. Any 100 digit number, if multiplied by 9, its single digit sum would be 9 only. है ना? And the question would become very tough because the option would be none of these, which you would never take because you are scared. Stress. I forgot your name. Nazia, okay. Nazia, why are you in stress? Are you still in the job? Leave the job. एक ही चीज करो. क्या करना है नौकरी करके? You are also into job. Very good. How many of you are working? See, Nazia, only you are working. चलो. Rule of 10 everyone knows. ये यार rule of 9 में एक मिनट देखना. Rule of 9. Rule of 9. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए. पॉइंट नंबर 1. Point number 1. Single digit sum, ये लिख ही लो. Single digit sum of a multiple of 9 is always 9. Single digit sum of a multiple of 9 is always 9. All right. Clear? And point number 2, which they really have given many a times, a number minus its reverse is always a multiple of 9. A number minus its reverse is always a multiple of 9. You can check it. You can check any number. Right. For example, if I say what is 81 minus 18? 63. A multiple of 9. Check any number. Right. Sir, how do you know it? 3, 2, 1 minus 1, 2, 3.
198. 198 is a multiple of 9. Check karo, 1 plus 9 plus 8, a multiple of 9. Why does it happen is something we have to talk. Because they have given a lot of time number and it's reverse. If you have analyzed the paper, 10-12 बार आ चुका number minus is reverse or number and it's reverse, right? So what happens is, देखिए, if I say 2-digit number, ध्यान से सुनिए, 2-digit number, 2-digit number, so AB minus BA. If AB is a 2-digit number, its reverse is BA. Now AB is written as 10 times A plus B and 10B minus A, right, which is 9 times A minus B. See, multiple of 9 आ गया. And they have given it 5-6 times number and its reverse. If you have analyzed the paper, you would know this, right? Similarly, अगर अपन 3-digit number का बात करेंगे, 3-digit number, x y z minus z y x. X y z is 100 times x plus 10 times y plus z minus 100 times z plus 10 times y plus x. And you see this is 99 times x minus z, again a multiple of 9. But ये हमेशा ध्यान में रखना, ये एब्रिविएशन बहुत बार आती है पेपर में, x by z 100 times x plus 10 times y plus z. Kindly mark it. A minus B solve ही नहीं करना यार, it's multiple of 9. Any number that is multiplied by 9 is a multiple of 9 बेटा. इसको solve क्यों करना है? X minus Z को. 99 is a multiple of 9. So if it is a multiple of 9, any number would be a multiple of 9 यार. Tension क्या लेना है? Got it? Because point number 1, it is written, if a number is multiplied by 9, single digit is 9. Isn't it? तो multiple of 9 तो बन ही गया. ठीक है? What is your name? Very good. Raghavinder? Good. Divisibility rule of 10. The number should end with 0. लिख लो. Divisibility rule of 10. The number should end with 0. Divisibility rule of 11. 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1. Series. Sum of odd places minus sum of even places. खत्म. नहीं. 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 goes till infinity. जितना मर्जी लिखते जाओ. For example, if I say 794, 794, is it exactly divisible by 11? Is it a multiple of 11? 794, 794. इसके नीचे लिखा. अब देखिए. 7 1 is 7 minus 9 plus 4 minus 7 plus 9 minus 4 equal to 0. If your answer over here comes out to be a multiple of 11 or 0, the given number is exactly divisible by 11, which means 794, 794 is exactly divisible by 11. ठीक है? Divisibility rule of 12, 3 and 4. Divisibility rule of 12. This is for 11. So 11 में क्या है? This series. And this series can be repeated any number of times. 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1. Though in our junior classes we have done sum of odd places minus sum of even places. We have never asked why. This is the reason. The series is the reason. समझे? Now divisibility rule of 12. रिमाइंडर 7, 11 और 13 में नहीं पूछता क्योंकि रिमाइंडर इससे आते नहीं है. Right? So they would. I'll do some questions. Don't worry. Right? Divisibility rule of 12. 3 and 4. 3 and 4. Divisibility rule of 3 and divisibility rule of 4, which means
sum of the digits is a multiple of 3 and last two digits are exactly divisible by 4. Sum of the digits is a multiple of 3 and last two digits are exactly divisible by 4. ठीक है. Divisibility rule of 13. Anyone? Rule of 13. Plus नहीं. हाँ? Which one? 12 वाला. Yes, we can do that. 12 वाला 3 वाला चल सकता है, उसमें no issues. Divisibility rule of 3 चेक करने के लिए rule of 3 लगा सकता है. ठीक है. Divisibility rule of 13. Anyone? Very good. You remember it. 1, 4, 3, minus 1, minus 4, minus 3. You remember the series, right? Question, if I say, is 13, 26 exactly divisible by 13? इसके नीचे लिखा, ठीक है? 1 ones are 1 and 3 fours are 12 and 2 threes are 6 and this is minus 6. If your answer over here comes out to be 0 or a multiple of 13, the given number is exactly divisible by 13. Clear? Now 13 तक rules important है. Important point लिखिए. Point number 1. 7 into 11 into 13 is 1001. Remember it. याद रखिए. Right? जहां पे भी 1001 दिख गया, it is a multiple of 7, 11 and 13. Then second, 111 is 37 into 3. Again important. 111 बहुत दिखेगा तुम्हें पेपर में. 37 into 3. ठीक है? Any number of the form A, 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 A. If there is a number of the form AA, 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 it is exactly divisible by 3, 7, 11, 13 and 37. हमेशा, every time. और नंबर से हो सकता है, but it is always exactly divisible by 3, 7, 11, 13 and 37. Sir, कैसे? Suppose I say 8, 8, 8, 8, 8, 8. It never looks like that it would be exactly divisible by 37. है ना? It never looks like it would be divisible by 13. It never ever feels like it is divisible by 7. है ना? तो चेक करना, ध्यान से सुनना प्लीज. Take 8 common, it is 1, 1, 1, 1, 1, 1, right? And then 8 here, take 1, 1, 1 common, it is 1, 0, 0, 1. Now 8, what is 1, 1, 1? 3 into 37. What is 1, 0, 0, 1? 7, 11, 13. Hence proved. Hence proved. देख लो तुम्हारे सामने. तो क्वेश्चन क्या आएगा आप सुन लो. मैं आज बोल रहा हूं, यार खड़ा होकर बोल रहा हूं, ये वीडियो दोबारा देख लेना सब लोग. फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर है. फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 88, 88, 88. Nobody is going to factorize it because people don't know that ये 37 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है. तुम्हें तो आ गया. So exactly क्या होगा, ये 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1 into 7 की पावर 1 into 11 की पावर 1 into 37 की पावर 1, सॉरी 13 की पावर 1 into 37 की पावर 1.
एग्रीड? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे गाइस? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 + 1 and then 1 2 3 4 5, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, which is 4 into 2 2 2 2 and 2 to the power 7, 128. पहला क्वेश्चन पक्का आएगा ये, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. राइट? देख बहुत इजीली, दिस इज 8 is 2 की पावर 3, 3 is 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, 37 की पावर 1. नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे? a + 1 into b + 1 into c + 1. सारे प्राइम नंबर्स लिखे, ऐड कर दिए, 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए. 128 factors of 88 88 88. Just remind me if this comes. I'm telling you this is coming, right? लास्ट ईयर का क्वेश्चन मजेदार, लोग बोलते हैं ना, राइट? तो लास्ट ईयर, सॉरी पहले ये देखना, पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए. एनी नंबर ऑफ द फॉर्म xyz इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 and 13. लास्ट ईयर पेपर में था 2023. xyz is exactly divisible by 7 11 13 और all of these पेपर में था लास्ट ईयर. लास्ट टू लास्ट ईयर शुभ्रा रंजन मैम के चैनल पे ही यूट्यूब वीडियोस में देख लेना, मैंने ये लिखवाया हुआ है, ये लिखवाया हुआ है, पेपर में आया हुआ, डायरेक्टली पेपर में आया. 2023 का क्वेश्चन है ये, राइट? फिर 2023 का एक और क्वेश्चन, ही सेज a number n is 9999 written 99 times. What is the remainder when n is divided by 13? इसका रिमाइंडर क्या जब 13 से डिवाइड करते हो? मेरा क्वेश्चन कुछ और है, लीव इट. मैं तुमसे फॉर्मेट थ्योरम ऑफ रिमाइंडर्स नहीं पूछ रहा हूं. आई एम नॉट आस्किंग यू मैथ्स. माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कैन यू सॉल्व इट? आंसर दो. इसको अपन क्या करेंगे कि 8 का डिजिबल होता है, जैसे 11 8 जा 80. अरे यार क्या कर रहा है? एक मिनट, you are dividing it by 13. What is rule of 13? Here leave it. Don't apply format, don't apply maths. It is not required. Format से नहीं होगा ये. हाँ 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 7 है तो 1 छूट गया, बस खत्म बात. यार you don't require maths. This is format theorem of remainders. I am MSc in maths, MPhil in mathematics, but I don't, they have not written in UPSC we want mathematicians. अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम कैसे करोगे इसको? Listen guys, AA 6 times is exactly divisible by 13. It is exactly divisible by 13. So सुनिए 9 9 9 9 9 9 divisible by 13. 9 9 9 9 9 9 divisible by 13. Up till 96. Up till 96 numbers, it is exactly divisible by 13. 16 पेयर्स बनेगा. 8 9 9 9 9 9 divisible by 13. सो अगर मैं ये 16 टाइम्स लिख देता हूं, सो टोटल कितने नाइन्स हो गए? ये 96 टाइम्स. सो 99999 रिटन 96 टाइम्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13. बचा क्या? पीछे के 3 9 बचे हैं.
पीछे के 3 9 को 13 से डिवाइड कर दो, 91 89 78 रिमाइंडर 11, खत्म। तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है? इंजीनियर हो? क्या किया था? अभी बीएससी की है, बीए की है? मैं बिलीव कर लो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यू डोंट रिक्वायर फॉर्मेट थ्योरम, खत्म। वैसे ही हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 से हो रहा है ना। सो व्हाई डू यू वांट टू इंडल्ज योरसेल्फ इनटू p की पावर a व्हेन डिवाइडेड बाय a? मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा था, व्हाट इज द आंसर? मैं एग्री कर रहा हूं, मेरी एक सिंपल सी बात क्या है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आई से इफ यू वांट टू होल्ड योर नोज लाइक दिस, व्हाई डू यू वांट टू होल्ड इट दिस वे? आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग। You don't require Fermat's theorem, beta. That is what I'm saying. These questions can be done without Fermat. Are you getting it? You don't require to indulge yourself in high level mathematics. मैं तो तुम्हें Fermat के Chinese remainder theorem भी सिखा दूंगा. You know what is Chinese remainder theorem? I know it. मैं तुम्हें सिखा दूंगा, आओ मेरे पास बैठो. I would love to do it. But point is you don't require it. You are not understanding. I understand you gave me an answer. Answer तो तुम्हारा सिंपल सी बात थी, वो लास्ट 2 डिजिट करके भी आ रहा था, बट दैट वाज नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट। ओ भाई, डू यू वांट अ रिटन गारंटी? यू आर राइट, बट डू यू थिंक आई कैन टीच इट? अरे पॉइंटलेस मैन, आई आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट वांट टू डू फॉर्मेट थ्योरम, दे डोंट वांट पीपल दोज हु नो फॉर्मेट थ्योरम, बिकॉज ये डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल से हो रहा है। तुम्हें क्लास में एक चीज समझाई गई कि भैया ए 6 बार लिखा है, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो वही तो मैं कह रहा हूं। किसी को समझ आ रहा है यहाँ पे? अरे यार एक बात सुनो, मैं फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाऊं? अबे यार तुम्हें आता है, ठीक है। आई हैव टू गिव द सिंपलेस्ट सोल्यूशन। फर्स्ट थिंग, योर सोल्यूशन इज राइट, आई एग्री। यू आर डूइंग फॉर्मेट थ्योरम, आई से यू डोंट रिक्वायर इट। I think you don't require it. You don't require that knowledge, nothing else. I am not denying your answer. You saying I am doing the same. Yes, I am doing the same, but everyone is understanding. That's more important, beta. Come on. I understand. Do you want a written guarantee? You are right. I have already told you you are right. मैंने तो बोल ही दिया, मैंने बोला कि नहीं बोला? हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बोल रहा हूं मैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सेम ही कह रहे हो। डू यू वांट कि मैं फॉर्मेट थ्योरम सबको लिख के दिखाऊं? आई वुड नेवर डू इट। उसकी इंप्लीकेशन ही नहीं है बेटा। कैट का पेपर थोड़ी ना दे रहे हो। मैंने कैट पढ़ाया, 10 साल कैट पढ़ाया, राइट। फॉर्मेट थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, मिशेलियन थ्योरम, 10 थ्योरम रिमाइंडर की बता के और 10 तरह के तुम्हें क्वेश्चन करवा दूंगा। पॉइंट ये, आई डोंट वांट टू इंप्रेस यू। पॉइंट ये कि पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और तुम्हारा बेसिक आता है पेपर। मैं सिर्फ ये डिपिक्ट करना चाह रहा हूं, दिस इज व्हाट दे वांट कि दे यू हैव नॉलेज ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, नथिंग एल्स। समझा? अब 9 इज रिटन 99 टाइम्स, 9 रिटन 96 टाइम्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 एज वेल, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 एज। क्लियर है? चलो, सो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? First of all, we have done series के questions where you were divided by 6. We found remainders and then with the remainders we multiplied those remainders and found the remainder. But सबसे important question जो बनता है, जो it has come 4-5 times, is this: n is 8 to the power 73. लिखना, n is 8 to the power 73. What is remainder? What is remainder?
when n is divided by what is the remainder when n is divided by 8 यार n is divided by 3 कर लीजिए चलो n is divided by 3. Now listen, this is something which has come 4-5 times. It's a very easy question. You just don't have to bother too much about it. ठीक है, ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं. Just check. ये नंबर पिक करो 8. 8 when divided by 3 remainder is 2. Agreed? 8 when divided by 3. देखो दो प्रोसेस चल रहा है. पहले तुमने नंबर उठाया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, रिमाइंडर इज 2. नाउ आई से व्हाट इज 8 स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3? 8 स्क्वायर इज 64. 64 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर इज 1. राइट, यू हैव टू मेक 1. सिंपल. 1 बनाना शुरू करो. Right, try making 1. लिख लो in remainders question, try making 1. Try making 1 in questions of remainders. Try making 1. क्लियर है? 1 बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. कई बार 1 नहीं भी बनता, उसकी भी बात करेंगे. सर अगर 1 नहीं बना तो क्या करेंगे? ठीक है, बट यू हैव टू मेक 1, राइट? एंड आई थिंक 90% टाइम 1 बनता है. नाउ वेयर डू यू वांट टू गो? 73. सो देखना 8 to the power 2, you have to go to 73. Can I write raised to the power 36 gives you 1 to the power 36? Raising 36 both sides. So what would happen is 8 to the power 72 also gives you 1 as remainder. Because you want to go to 73, so you have to go closest. That is the reason we make 1. Because 1 raised to the power anything is 1. And if you're understanding it, तुम ना डायरेक्टली ये भी लिख सकता है. ध्यान से सुनो. 8 to the power 2 is 1. So 8 to the power any multiple of 2 is 1. 72 is a multiple of 2 less than 73. 8 to the power 72 is also 1. तुम डायरेक्टली लिख सकते हो. क्लियर है? क्लियर है? सो व्हाट इज लेफ्ट? 8 to the power 72 into 8 to the power 1 gives you 1 into 8. So 8 to the power 73 leaves remainder 8. और 8 जब 3 को डिवाइड करता है रिमाइंडर इज 2. आंसर 2. किससे? एक क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करके दिखा दे. सारे आते हैं ना? सॉल्व किए बिना जाना अपन. ठीक है, 1 बनाओ, नथिंग एल्स. रॉन्ग, गलत है, गलत है, गलत है. अब दोबारा प्रूव कर दो, नहीं तो मैं बता दूंगा आंसर क्या. चैलेंज है, घंटा लगा लो करके दिखा. आता है ना फॉर्मेट? फॉर्मेट से करके दिखा. अबे तब से बोल रहा हूं यार, शांत रहो. आई हैव टू टीच अदर्स ऑल्सो. इट इज नॉट दैट आई हैव टू टीच यू ओनली. And it is not that you know something means everyone knows something. है ना? You know it, beautiful. I have been to the classes, teacher were teaching. I knew it. But I did not tell that this is also the way. Now you solve it, and if you don't solve it, then you come back to me, answer is not 1. And you are wrong. And I've been telling you, man,
It's okay. You know it. Beautiful. But I have to teach everyone. You don't understand my responsibility. I cannot say you are right every time. And I can give you 100 questions and you will make 100 mistakes. I can assure you that. You are not understanding it. तुम्हारा हो गया ना, शांत बैठो. बहुत अच्छी बात है. यहां पे बहुत सारे और भी कर रहे हैं. उनका भी हो गया था. और जिस दिन ये काम आएगा ना कि मुझे बताना है कि मुझे क्या क्या आता है, एमएससी मैथ्स हो यार, एमफिल मैथ्स हो, यहाँ खड़ा हूं ना, 15 साल से पढ़ा रहा हूं. शांत हो जाओ यार. रिलैक्स मैन. I have to teach her. I have to teach her also. I have to teach him also. And they have to understand it. That is the reason they are in the class. I appreciate you. You appreciate me. And if you think you know it, solve it. और तुम्हारा वन आंसर गलत है. चलिए गाइस, क्वेश्चन लिखिए. 11 to the power 33 by 8. 8. Find remainder. इसी से करते हैं. Don't worry. You solve that question. You solve that question. Give me that question. एक और दूं? एक और दूं? अरे करने दे यार लोगों को. तुझे आता है तो वो करना. फॉर्मेट से करके दिखा मेरे को. मैं ही फॉर्मेट से करके दिखाऊंगा तेरे को. गाइस गो बाय द बेसिक रूल. सुनो, 11 उठाओ, 8 से डिवाइड करो. डू नथिंग एल्स, राइट? सुनो, 11 की पावर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर इज 3. नाउ व्हाट इज 11 टू द पावर 2? डोंट डू दैट. देखो यार, पता है क्या, तुम ऐसा तो नहीं कर सकता 11 टू द पावर 3 भी देखेगा, 11 टू द पावर 4 भी देखेगा, अगर 1 नहीं आएगा. सुनिए, 11 टू द पावर 1 गिव्स यू 3, देन 11 टू द पावर 2 गिव्स यू 3 into 3 which is 9. Got it? 11 to the power 1 gives you 3, 11 to the power 2 gives you 3 into 3 which is 9. 9 when divided by 8 remainder 1. 1 बनाओ, 1 बनेगा. Clear है? Again, what did I do? 11 to the power 1 gives me 3, 11 to the power 2 gives me 3 into 3. So I did not do 121 and then divide by 8. No. पहले स्टेप से आंसर आ रहा है. 11 to the power 1 gives you 3, 11 to the power 2 gives you 3 into 3 which is 9. 9 when divided by 8 remainder is 1. 1 बना. So 11 to the power 2 is 1. A multiple of 2 less than 33. Directly लिख दो. 11 to the power 32 is also 1. Directly लिखो. Right? अभी बचा एक पावर और. So 11 to the power 32 into 11 to the power 1 is 1 into 3 which is equal to 3. Over. क्या करना है? 1 बनाना है. हाउ डू यू डू इट? इंक्रीज द पावर ऑफ अ नंबर एंड कीप ऑन डिवाइड. अभी कंफर्ट हुआ 50%? यार टेंशन मत लो. एक और करे. यस बेटा. क्या बेटा? सुन ना मेरी बात सुन बेटा. मेरे को आई हैव टू गो टिल 33. मेरे पास आया 11 to the power 2 is 1. राइट? मैं ऐसा लिख सकता हूं 11 to the power 2 raised to the power 16 gives me 1 की power 16 and this would give me 11 to the power 32 is 1. और अदरवाइज तुम एक बात सुनो, 11 to the power 2 is 1, 11 to the power any multiple of 2 is 1. 33 के पीछे मल्टीपल ऑफ 2 कौन सा है? 32. तो डायरेक्टली लिख लो. डिविजिबिलिटी रूल्स. गॉट इट? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. अब थोड़ा टफ करें. One step ahead. Let's do one step ahead. So I say 2 to the power 71 by
7. चलो ट्राई इट. रॉन्ग, गलत. गलत है, दोबारा कर ले. देख लेते हैं. 4 is the answer. वन तो बन ही नहीं रहा बेटा. वन तो इमीडिएटली आंसर आ जाता है. अगर मैं बोलता ना 6 की पावर 71, फिर तुम सोचते 1 हो सकता है. 1 नहीं है आंसर. 4. वन बनाओ आशीष. 4. 1 बनाया, 2 की पावर को इंक्रीज कर, खत्म कर, टेंशन मत लो. सुनो, 2 की पावर 1 gives you remainder 2 when divided by 7, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो सकता है, राइट. 2 की पावर 2 leaves remainder 4. 2 की पावर 3 is 8. 8 when divided by 7, remainder is 1. राइट. सो वंस यू मेक 1 देन इट इज राइट. यू नो, देखना ध्यान से सुनना बेटा, पीछे है तुम सुनना. सुन, 2 की पावर 3 is 1, which means 2 की पावर any multiple of 3 is 1. What is the multiple of 3 less than 71 बेटा? 69. डायरेक्टली लिख लो, 2 की पावर 69 would also give you 1. राइट. क्लियर है? मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कि सर ने लिखा था 2 की पावर 3 is 1, which means any multiple of 3 is 1, which means 2 की पावर 69 is 1. बचा क्या? 2 की पावर 2 more, which means 2 की पावर 69 into 2 की पावर 2 would give you 1 into 4, which is equal to 4 as remainder. ये रहा आंसर. अब 1 बनाने का फायदा, once you make 1, right, एक स्टेप के बाद तुम्हारा 1 बन गया, right? So your possible answers are either 1 or 4 or 2. उसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं है. सो सपोज बाय चांस तुमने ये बनाया, राइट, और ऑप्शन में सिर्फ 4 ही था, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे आंसर इज 4. बाकी ऑप्शन ही नहीं थी. ठीक है. सो रिमाइंडर इज 4. अभी क्लियर है? 1 बनाना है. एक और करें गाइस, शैल वी डू वन मोर? करके दिखाओ. चलो, इलेवन की पावर 33 by 7. चलो, ग्रेट शमरन, गुड गुड यार. Yeah, there is Euler's theorem also. Yeah. Fermat theorem, Euler theorem. Somebody is talking about Euler theorem also. Chinese remainder theorem. 1 है. अब 1 है. That is what I was telling you, beta. You don't apply it every time. You don't have to. You are not getting it. ईयर 1 बना, सारे आंसर आ जाएंगे. मान ले मेरी बात, वो अप्लाई ही पर्टिकुलर केस के लिए करते हैं हम. मुझे तो देखते पता चल जाता है. एंड व्हाई वुड आई आस्क, जब एक प्लेन सिंपल सॉल्यूशन है मेरे पास, व्हाई वुड आई बॉदर? 1, आंसर इज 1. 1 बनाओ, कुछ मत करो, 1 बनाओ, टेंशन मत लो, 1 बनाओ. I have huge respect for somebody who taught you format.
salute to him or her, leave it. Every question cannot be solved by format and errors. वो गलती है, उन्होंने तुम्हें पर्टिकुलर केस बताया होगा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं भी टीचर हूं, मैंने IIT पढ़ाई हुई है, मैंने MSc पढ़ाई हुई है, मुझे पता है टीचर कभी नहीं बोलेगा कि सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व करो। तुम गलती कर रहे बेटा, 1 बनाया, खत्म कर बात, 1 बनाओ जल्दी। यार तुम 1 बनाओ, डोंट वरी, 11 to the power 1 gives you 4, ऐसे करके शुरू करो, चल कर। तो तू कहां थी इतने दिन, इतना टेंशन लेके बैठी हुई? हाँ, वाओ गुड। 1 है ना, मैंने फंसाया। आशीष क्या आंसर है? 1। सुनो, तुम देखो, तुम्हें बड़ी आराम से आएगा समझ। सुनो, 11 की पावर 1 when divided by 7 आंसर इज 4। ये हो रहा है सबका, ये लिखा सबने, ठीक है। देन 11 की पावर 2 क्या होगा? 4 into 4 16, 16 when divided by 7 रिमाइंडर इज 2, ये लिखा था सबने। दिस इज द ब्यूटी, तुम्हें 11 to the power 3 के लिए 11 into 11 into 11 नहीं करना। 11 to the power 3 is 11 to the power 1 into 11 to the power 2, which is 4 into 2 8, 8 when divided by 7 remainder is 1। लो, यहां पहुंचना जरूरी है, यहां पहुंच गए निर्वाणा। 1 के बाद निर्वाणा है, क्यों? क्योंकि ना देखो इधर बेटा, 11 to the power 33 जाना है, 3 is a multiple of 33, so directly लिख लो सर 11 to the power 33 is also 1। खत्म, ओवर, डन। एक और करोगे, 1 बनाओ, टेंशन मत लो, 1 बनाओ, डाइव इनटू इट। जिसको 1 बनाना आ गया वही कर। या बुलंदशहर के लोग बहुत बुलंद हैं, लेट हो जाते हैं, कभी कुछ, फिर लोगों को इलॉजिकल बोलते हैं। चलो अगला देखो, एयर करके दिखाओ, 1 बनाओ प्लीज, राइट। 2 की पावर 77/9। गुड 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 सिमरन। Guys, thank you so much. There are a lot of students watching online. Thank you so much. God bless you all. वन से कर बेटा, 1 से किए फिर मैं मान जाऊंगा। यूपीएससी में कौन सा था यार? यूपीएससी में आया था ना 21 में, कराता हूं। रेस टू द पावर 20, 7 टू द पावर, हाँ 7 टू द पावर, I'll give you the question, याद आ गया मुझे। यूपीएससी में था 7 टू द पावर 2019/10, मुझे याद आ गया, बाय 10। तो वो भी करते, पहले ये बताओ। 4 देखिए, 2 है बेटा, 1 बना के किया ना, ठीक है बेटा। देखो जरा, 2 की पावर 5 छूट रहा है ना, 1 कौन से स्टेप पे आ रहा है? नहीं यार, 2 की पावर 6 पे आएगा, 2 की पावर 6 पे 1 आएगा। यार डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, इस पे तो बहुत इजी लगेगा। सुनो, 2 की पावर 1 gives you 2, 2 की पावर 2 gives you 4, 2 की पावर 3 gives you 8, 2 की पावर 4 is 16, 1 plus 6 7। Whenever you divide a number by 7, add the numbers। 16 to be divided by 9, 1 plus 6 is 7, right? 2 to the power 5 is 32, 3 plus 2 is 5, 2 to the power 6 64, 6 plus 4 is 10, 1 plus 0 is 1, 2 की पावर 6 gives you 1, 2 की पावर 6 gives you 1, ठीक है।
सो लिसन, इफ 2 की पावर 6 गिव्स यू 1, आंसर गलत है तुम्हारा भी, आंसर गलत है. 2 की पावर 6 गिव्स यू 1, सो मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 77, 72 है ना, which means 2 की पावर 72 would also give you 1. बचा क्या 2 की पावर 5 और, which means 2 की पावर 72 into 2 की पावर 5 gives you 1 into 5. आंसर 5 है. 5 आ रहा था किसी का आंसर? 5 आ रहा था. गुड. यार तुमने 1 बना के नहीं किया था, 1 बना के. 1 बना के करते तो आ जाता. देख लेते हैं, आंसर गलत है. उसका करना है यूपीएससी 7 की बार 2019 बाय 10. देखता हूं, आई डोंट थिंक सो. 3 होगा आंसर. 3 है. चल दर्शिका कर दे. बोल बेटा, तेरे को समझ आ रहा है ना? ऐसा करना, कल आधा घंटा पहले आना, नए 1:30 आना. जिसको कोई प्रॉब्लम है ना, कम हाफ एन आवर अर्ली, विल सिट. पर पहले मुझे ये करके दिखाओ ये क्वेश्चन. कोई नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन करके दिखाएगा सब लोग. 3 ना, आई थिंक 3 आना चाहिए. 3 है ना? यस. अब देखो यार, यूपीएससी क्वेश्चन है, डोंट बॉदर, जस्ट, अरे यार अच्छा, 7 की पावर 2019 बाय 10, राइट. 7 की पावर शुरू करते हैं गाइस. 7 की पावर 1 gives you 7, 7 की पावर 2 gives you 49, 49 means divided by 10, remainder is 9. 7 की पावर 3 gives you 7 की पावर 1 into 7 की पावर 2, 7 into 9 is 63, 63 when divided by 10, remainder is 3. and then 7 की पावर 4, देखो 7 की पावर 4 is 7 की पावर 1 into 7 की पावर 3, 7 into 3 is 21, 21 when divided by 10, remainder is 1. लो, 7 की पावर 4 gives you 1 as remainder, right, which means a multiple of 4, सुनो, a multiple of 4 less than 2016 2016. divisibility rule बार बार आ रहा है, right. 7 की पावर 2016 also gives you 1 as remainder, नहीं, which means 7 की पावर 2016 into 7 की पावर 3 gives you 1 into 7 की पावर 3 क्या दे रहा था? 3. 1 into 3 is 3. यूपीएससी पूछ रही है ऐसे क्वेश्चंस, करने पड़ेंगे. हर साल दूसरे साल ये क्वेश्चन आ रहा है, so you cannot ignore it. And this is no basic math. If you think this is basic maths, you just need to think again. ठीक है, बेसिक मैथ्स नहीं है जो लोगों ने शोर मचा रखा. बेसिक मैथ्स तो है, हाँ 15 में 14 में बेसिक मैथ्स आता. दिस इज नो बेसिक मैथ्स. एक और करें, डू वन क्वेश्चन एंड एवरीवन हैज टू डू इट. कम ऑन एवरीवन. 3 की पावर 101 बाय 7, फाइंड रिमाइंडर. I don't think so यार. तुम 1 बना के करो भाई. तुम नहीं कर रहा, तुम नहीं मान रहा बात. तुम्हारे सारे मैक्सिमम आंसर्स रॉन्ग हैं इसीलिए. मैंने तुम्हें पहले बोला था, I'll prove you wrong. तुम 1 बनाओ ना यार, आराम से करो क्वेश्चन, क्यों स्ट्रेस ले रहा है?
ये 3 बोल रहा है कोई आंसर यार। सिमरन किसका आंसर है ये? इट इज 3 की पावर 101 वाला। 5 पीछे वाले का क्या आंसर था? 3 था। ठीक है, मुझे नहीं पता। ओके ओके ओके, आई थिंक सो। देख लेते हैं। 6 स्टेप पे बन रहा है 1, बस फिर ठीक है। 6 स्टेप पे बन रहा है, देखो 6 पे बनेगा, 6 पे बनेगा, है ना। सो डोंट वरी, दैट इज द रीजन आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन। डोंट वरी। देखो 3 की पावर 1 gives you remainder 3, 3 की पावर 2 is 9 gives you remainder 2। उसके बाद सीखो प्लीज, लिसन। 3 की पावर 3 is 3 की पावर 1 into 3 की पावर 2 which is 6। 3 की पावर 4 is 3 की पावर 1 into 3 की पावर 3 18। 18 when divided by 7 remainder is 4। इस तरह सीखो प्लीज। 3 की पावर 5 is this into this, 3 into 4 12, 12 when divided by 7 remainder 5, right? And 3 की power 6 is this into this, which is 3 into 5 15, which is 1। 3 की power 6 gives you 1। If 3 की power 6 gives you 1, now multiple of 6 less than 101, 96, isn't it? Wow, good here। Multiple of 6 96, so 3 की power 96 also gives you 1। बचा क्या? 5 more। 3 की पावर 96 into 3 की पावर 5 gives you 1। 3 की पावर 5 क्या दे रहा था? 5। आंसर इज 5 यार, आंसर इज 5। We will continue this practice tomorrow also guys, right? Don't do anything today, just leave it on me। मेरे को 3 क्लास चाहिए नंबर्स की। So after 3 क्लास तुम लोग परिपूर्ण होगा। So कल again 2 to 5 कर लेते हैं। I need 3 hour session, right? चलिए, thank you so much।